Hi everyone, once again back to my show. So, hi Harshit, welcome to the show. It's great to have you here. Thank you so much, Shubham. Thank you so much for inviting me and considering me for this show. I am feeling Yeah, really good. Right, yeah. it's Actually, such I tell you, like like very honestly. So when I started my this podcast, you were on my top 5 list of guests, and today is the day finally. And thanks. So I'm so excited to take this forward and to have a conversation with you around most important topics in the corporate world, right? So these are going to be a part. So I hope you are also excited and very excited, especially after hearing that I was among the top five, and then it's I think your 50th podcast, right? And I am on the 50th one, so that's good. yeah, that's it. So let's start. So the first thing is all about, I just want to know from your side, like, can you take us back to your early days, like what kind of person you were and what kind of dream you were dreaming those days as a kid, right? And that everything shaped you today as a program manager. So yeah, just Okay, so Shubham, well, see, I am a kid. I was a kid. I mean, I was born in 19s, right? So mm-hmm, you can call कि millennial है, ठीक है. mm-hmm, So the thing is that when मतलब मेरा जो starting रही है, I have been into like I have born and brought up in a business family, right? okay, So in terms of मतलब वैसे कोई आर्थिक issues कभी मेरे साथ नहीं हुए, mm-hmm, but बट होता है ना, हर इंडिविजुअल के साथ बचपन में कुछ ना कुछ होता है जिसकी वजह से उसका फ्यूचर शेप करता है, राइट? एज यू जस्ट मेंशन, exactly, राइट? exactly, Person I was and what I am now. So honestly, I was studying in this school called BHS. I don't know how okay, much you are familiar with or not, but it is one of the top schools, right? And mm-hmm, Shrimp वहीं से पढ़े हुए हैं इलाहाबाद से, right? mm-hmm, So I was a very poor student, right? I was mm-hmm, very bad at studies. मैं बहुत ही ज़्यादा introvert था. I was a mm-hmm, dumb kid, right? And in 8th standard, I got failed. I got okay, failed literally. Year back mm-hmm, लग गई. So my dad, because मेरे पापा थोड़े से अच्छे reputable person रहे हैं, right? हैं in mm-hmm, fact. So he mm-hmm, switched my school, right? He's उनको mm-hmm, मुझसे कोई भरोसा नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी ये बड़ा लड़का कुछ भी करेगा. mm-hmm. इनफैक्ट उन्हें लगता था कि एट द एंड मैं एक दुकान खोल के बैठ जाऊंगा. दैट इज व्हाट ही थॉट अबाउट मी, राइट? Mhm, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम इट हिट, राइट? जब मैं फेल हुआ एंड माय डैड सेड दिस टू मी दैट ओके, आई एम नॉट होपिंग एनीथिंग फ्रॉम यू. फॉर mhm, मी यू आर जस्ट अ किड, राइट? mhm, एंड आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस. और जब ये बात जब आपके पापा बोलते हैं देन यू फील वेरी mhm. बैड, राइट? Yeah, exactly. And you are सो mentioning about the story of when you were at eighth करेक्ट, standard, right? Exactly. 8th स्टैंडर्ड, राइट? एंड आई वाज वेरी बैड. सो ऐसे Okay. पास होता था, पापा को बोलना पड़ता था हर बार, प्रिंसिपल को बात करनी Mhm, पड़ती थी प्रिंसिपल से, राइट? सो दिस इस तरह से mhm, मैं 8 तक पहुंच गया था. बट 8 वाज अ टाइम जहाँ पे प्रिंसिपल ने उनको बोला पापा को कि अब इसको आप ईयर बैक लेने दो वरना इसका करियर mhm, खराब हो mhm, जाएगा. एंड मैं मैथ्स में अच्छा था, बाय द वे. आई वाज mhm. बैड इन ऑल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट मैथ्स. ओके, मैथ्स वाज माय फेवरेट, राइट? Okay. सो so there was this Bajal sir, right? I Mhm. can take my own time when I'm narrating, when I am telling you something, right? That's fine. There Yeah, is that's no, fine. yeah. So basically, there was this Bajal sir, right? Mhm, So उन्होंने बोला कि मेरे पापा को सीधे ऐसे ही बोला हिंदी में. He mhm, just told my father that see, this 8th standard is the backbone of a kid's career, right? mhm, mhm, तो अगर 8वीं क्लास में ये बच्चा अगर फेल हुआ है और अगर आपने इसको फिर से रिक्वेस्ट करके प्रमोट कर दिया तो इसकी मतलब कंसिडर इट खत्म, राइट? mhm, ही वोंट डू एनीथिंग. 8th इज द mhm. रीढ़ की हड्डी, 8th जो Exactly. होता है. Okay. Mhm, पापा ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं. सो मेरा पापा ने एडमिशन करा दिया. सो आई वाज स्टडीइंग इन आईसीएससी, राइट? देन mhm, आई मूव टू सीबीएसई. तो mhm, सीबीएसई में पढ़ाया. सी, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, एक तरफ हिंदुस्तान के टॉप नॉच स्कूलों में उसका नाम आता है बीएचएस का, राइट? यू कैन सर्च exactly. अबाउट बीएचएस. एंड Mhm, देन आई वेंट टू सम स्कूल. स्कूल को भी mhm, खराब नहीं होता, स्कूल अच्छे mhm. होते, बहुत होते, कुछ अच्छे होते हैं, राइट? हाँ, तो for sure. मेरा मतलब मैं एक अच्छे स्कूल में चला गया, ऐसा समझ लेते हैं, बहुत अच्छे स्कूल से. ठीक है. तो आप जैसे इमेजिन करते हो ना कि एक ब्राइट रूम से एक इंसान डार्क रूम में जाता है, वैसा ही कुछ हुआ मेरे साथ, राइट? Mhm, एंड आई वाज लाइक कि व्हाट एम आई गोइंग टू डू नाउ? mhm, So a failed kid, right, who was failed in mhm, class 8. In ninth mhm, standard, I started studying and I ranked 5th rank, mhm. right, in class ninth. And then in 10th, in class 10th, I ranked third, I right? see. And उसके Okay. बाद से मेरा पढ़ाई में मन लगने लग गया, रुचि लगने लग गई.
right? And that was the journey. फिर again in 12th class you distract, right? बहुत बच्चे हो जाते हैं. I was so one of it. That is why I couldn't crack IITs or NITs, and I did my engineering from a private college, right? And then from that, electronics and communications engineering career, and then I am into this IT thing, right? So in a nutshell, see, there are two instances where I learned. First instance was my uh, uh, eighth class, जो मैंने अभी आपको बताया, and then there was another thing which I learned in my job, right? हम उसका आगे डिस्कस करेंगे. This is all about me, right? This is how I shaped up. कहते हैं ना, बचपन में कोई भी see, I'm not successful first of all, right? I am on my way, right? I'm still paving my way, right? I am not a successful man. I would refrain myself calling that. But हाँ, जितना भी छोटा बहुत भी जो हमने लाइफ में थोड़ा बहुत भी पाया है, क्योंकि सक्सेस एक तुलनात्मक शब्द है, राइट? हर सक्सेस के मतलब अलग होते हैं, राइट? किसी का सक्सेस 6 एप्स बनाना होता है, किसी का मकसद यूनिकॉर्न बनाना होता है. मैं कहाँ से निकला हूँ? मेरे डैड के लिए आई एम ऑलरेडी सक्सेसफुल मैन, राइट? बिकॉज मेरे डैड को कुछ नहीं थी मुझसे, राइट? नाउ एट दिस स्टेज आई एम इन अ टॉप, मतलब मैं ग्लोबली एक बहुत अच्छी रिनाउंड कंपनी में हूँ, ठीक है, एंड आई एम एट अ वेरी पैकेज. सो उनके लिए दैट सक्सेस फॉर मी, मेरे लिए नहीं है. सो माय पॉइंट इज दैट हर इंसान की लाइफ में कुछ 2-3 मोमेंट ऐसे आते हैं जो उसके सक्सेस डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं. अगर वो उसमें उसने अपने आप को कर लिया, उसने अपने दिमाग को कह दिया नहीं बॉस ये मेरा नहीं है काम, या उसने लड़ दिया, तब वो बन जाएगा जो आज वो है. सो दैट इज द की थिंग जो मैंने लाइफ से समझा. बुक्स में तो आप लिखे ही रहते हो, लेकिन आप रिलेट नहीं कर सकते हो जब तक आपके साथ वो चीजें हुई नहीं होती. आई एम श्योर आपके एक्सपीरियंस, हाँ फॉर श्योर. करेक्ट करेक्ट. आप कुछ टोटली पढ़ते हो, डिफरेंट, राइट? आपको मैं एक चीज और बता दूं, कोई बच्चा महाभारत क्लास 8th में पढ़ रहा है, कोई बच्चा 30 साल की उम्र में पढ़ रहा है, लेकिन 30 साल वाले को ज्यादा इंट्रिग कर रही है महाभारत, क्योंकि वो रिलेट करता चला आ रहा है कि देखो ये बॉस मेरे साथ हुआ है, मैंने रिलेट, करेक्ट? अब उसका दिमाग को मैच्योरिटी है, राइट? सो दिस इज व्हाट मेरा बचपन ऐसा गया है. मैं बहुत ही ज्यादा बेकार स्टूडेंट था. बेकार इज ठीक है, बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, बट हाँ दैट शेप जो मुझे बहुत ही अच्छे गैंग से, जब मैं एक छोटे गैंग में आया जहाँ पे थोड़े से बच्चों की जो क्लास थोड़ा सा मीडियम वर्ग के बच्चे थे, देन आई यू रियलाइज कि बॉस देखो लाइफ से नहीं चलनी सकती. सो दिस वाज वन थिंग. There's one thing which yeah, so which I want to mention here. So you have mentioned about so at the 8th standard, the things have changed for you a bit. Okay, so I just want to ask you, what hit you, man? Like, what was the thing in your mind at that time कि जब आप बड़े स्कूल से एक दूसरे स्कूल में एडमिशन हुआ, so क्या एक ऐसी चीज थी जिसने like that lets you a bit fire inside you, and what was that thought in your mind? Like, I just want to know going into your mind that time. Yeah. ओके. तो मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बोलता हूँ, एंड आई रियली डोंट वांट टू साउंड बैड, तो मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ. अगेन, कोई स्कूल खराब नहीं होता, राइट? एग्जैक्टली. जब आप एक बहुत अच्छे स्कूल से, मेरा जो स्कूल था ना वो, आई शुड नॉट यूज दिस एंड आई एम यूजिंग इट बिकॉज आई वांट टू बी रियली कैंडिड, राइट? एंड आई एम लिविंग अप टू व्हाटएवर यू विश टू एडिट और व्हाटएवर यू विश टू कीप. मेरा स्कूल एक नाले में था. इट वाज वेरी स्मॉल, जहाँ पे बच्चे वैसे ही, मतलब वैसे, फिर अगेन कोई बच्चा खराब नहीं है, ठीक है, बच्चे, लेकिन आप कहते हो ना, आप जिनके साथ बड़े होते हो वैसी आप मेंटालिटी रेज करते हो, मतलब यू डिफाइन थिंग्स, राइट? वहां पे जो है बहुत ही ज्यादा लाइक इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स रहते थे, राइट? उनके जो लोग अफोर्ड कर सकते थे, उस तरह का ट्रीटमेंट मुझे पापा ने दिलवा दिया था. मतलब मैं पापा को महान ही बोलूंगा. एक बच्चा वहां पे डिप्रेस, एक अच्छे स्कूल से जाने के बाद, और पापा ने डिसीजन लिया नहीं करेगा तो यहीं से कर लेगा, राइट? तो पॉइंट इज, जब मैं क्लास में जाता था ना, मुझे बदबू आती थी नाले की. आई सी. ठीक है, दीज आर द मोमेंट्स, राइट? दीज वर द मोमेंट्स, लाइक कि मैं क्या छोड़ के आया हूँ, मैं then you कितना मेरे realize. Exactly. देन आई रियलाइज्ड कि That's the क्या thing. क्या I हम got वहाँ it, man. पूरे सेशन चले गए, टीचर नहीं आते थे उस स्कूल. मतलब दिन आ गया, एक सब्जेक्ट पढ़ा दिया, x² + 2x + 3, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दिया, पूरा कोर्स खत्म हो जाता है ऐसे स्कूल में. And we used to give my parents used to give so much money in that school, and what I did, so these were the changing moments, right? Exactly. So that is something I can also relate, like when you get something in your life, so you don't value those things. फिर जब आप उसके downfall में आते हो, then you realize कि नहीं, कि वो चीजें इतनी बढ़िया होने के बाद when you get a bit down, so you feel and you realize कि नहीं यार,
दोस्त ये नहीं है, अपने लिए थोड़ा और वो ऊपर चीजें होनी चाहिए, और एक एक किसी दैट इज महान समथिंग इंसान ने ये a बोला bit you feel guilt about yourself, man. And when you feel a guilt about yourself, at that time those things, start lighting up you, ki nahi, now this is not going to be my cup of tea, I need to work and I need to make sure that I would be doing I great. need to So get out of it. I need to get out of it, right? Because see, exactly. के बाद आपके पास एक 10th मिलता है आपको स्कूल चेंज करने के लिए, एंड आई वाज लाइक मुझे Hmm. यहाँ से निकलना है. अच्छा, Hmm. गुड पार्ट है, सी कितने महान लोगों ने ये बात बोली है कि जब चीजें चली जाती है ना तो आपको उसकी वैल्यू पता चलती है, Exactly. राइट? यही होता है, ये सबके साथ होता है. And that is for बहरहाल तो everything. That is for हाँ, everything, either it's a job, either it's a girl, or either it's a life, or either it's your absolutely parents, anything, then you realize the exact value of that thing. So that's why we say like कि हमें क्या नाम है, value करनी चाहिए whatever we have. And that's why it is mentioned every time. The gratitude is something which is a very common correct. in today's world ki, like we have seen about the pandemic. Okay, in the pandemic a lot of people have lost a lot of things, right? And still we are Correct. grateful that we are here, we are having a conversation, and we both shared one place as a colleague as well. So that is something, which is something great. So that's the thing. Anyways, like from there, now can you give us some kind of insights about about your corporate journey, and like you are now working as a program manager. Okay, so I just want to know your corporate journey, how it all shaped, what kind of job you started from, and how you reached to the position of program manager. That is one thing. And second thing, you just tell us, to all the audience and to me as well, like we want to know what is program manager and what does they do. Yeah. Okay. So if I start talking about my corporate journey, so Mm-hmm. I started as a customer executive in a BPO, Okay. right after doing my engineering. So I Mm-hmm. got this company. I won't again name it, but it was a very good company. And we Okay. didn't knew over there it was written software engineer, right? But when I went Okay. into it, I got to know, I got to learn that okay, it's a customer executive job, right? Mm-hmm. So that's okay, right? So one more thing. See, I'll tell you one more thing again out of experience. You Mm-hmm. will never get things which you don't deserve. Never ever. And in fact, if you get it, you will lose it, right? Mm-hmm. So always there in the mind, there was one thing that okay, how can I get into software development? Because I didn't knew anything about software development, right? Okay. कोडिंग में आप थोड़े से अच्छे हो गए, आपको आपको Mm-hmm. ऐसे कैसे है कि लोग इतने जॉबलेस घूम रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग, आपको Mm-hmm. कैसे मिल जाएगी अच्छी जॉब, इतना अच्छा स्टार्टिंग कैसे मिल जाएगा? बिकॉज आई डिडंट डू एनीथिंग, राइट? You Mm-hmm. have Mm-hmm. to put some efforts to achieve something, right? So that was Exactly. okay. ये थॉट मेरे Mm-hmm. दिमाग में था, तो निराशा नहीं हुई इस जॉब को, राइट? Mm-hmm. Mm-hmm. बट आई वाज वेरी हैप्पी कि मुझे कोई जॉब लग गई है. मुझे 18,000 या Mm-hmm. 19,000 जॉब उस टाइम में थी, आज से 10 साल पहले. आई वाज Mm-hmm. वेरी हैप्पी कि Okay. एटलीस्ट घर जाकर पेरेंट्स से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे. आई नेवर टोल्ड देम कि Mm-hmm. आई वाज वर्किंग कस्टमर एग्जीक्यूटिव थिंग, वरना वो क्या Mm-hmm. बोलते मेरा बच्चा बीपीओ में. अब बीपीओ बीपीओ का तो ऐसा हाल था ना. Exactly. Huh. सो बस एक चीज अच्छी थी कि आई वाज, बनिया दिमाग अच्छा होता है, आई टेल Mm-hmm. यू. Mm-hmm. बनिया दिमाग बहुत खुरापाती होता है और उसे पता है कैसे चीजें आगे बढ़नी Mm-hmm. है, राइट? सो व्हाट आई डिड, मैंने 1-2 महीने काम किया. सो आई बिल्ड गुड रिलेशनशिप्स विद माय मैनेजर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट पीपल, Mm-hmm. राइट? सो व्हाट आई अर्ज्ड देम दैट Mm-hmm. प्लीज एनरोल मी इन द नाइट शिफ्ट. Okay. एंड नाइट शिफ्ट ऐसी है जो बहुत कम लोग जाना चाहते हैं, एंड आई वाज वेरी मच Mm-hmm. एक्टिव. उसके दो Mm-hmm. फायदे होते हैं, बिकॉज मेरा Mm-hmm. एक इंडियन प्रोसेस था. आई वाज लाइक इन सम इंडियन मल्टी नेशनल कंपनी, राइट? Mm-hmm. जिनका प्रोसेस प्रोसेस हमारे पास था. तो नाइट में ट्रैफिक कम होता है इंडिया में, राइट? Mm-hmm. सो आई यूज Mm-hmm. ब्रेन, आई सेड मुझे नाइट शिफ्ट में डाल दो. सैलरी भी थोड़ी कम मिलती थी वहां पे, बट इट्स ओके. Okay. नाइट शिफ्ट में Mm-hmm. ट्रैफिक कम हो जाता है, अलाउंस कम हो जाता है. Mm-hmm. उसका दो फायदा होता था कि एक तो डिनर मिलता था, कैब आने जाने की मिलती थी, तो दैट वे Mm-hmm. सोचा. एंड That is a उसी टाइम complete में, Indian mindset. That is a complete Indian mindset, I'll say. right, and then in the morning I Mm-hmm. had joined one certification course of C. मैं कोडिंग सीखने लग गया था. अच्छा. तो मतलब जिंदगी ऐसी चली है 1 साल की, मैं सुबह कोडिंग सीख रहा हूँ. मैं और रात को. 10 बजे सुबह निकलता हूँ, रात को Mm-hmm. आता हूँ 6 बजे, तो 7 बजे कैब आ जाती है. कभी आप बीपीओ के Mm-hmm. बारे में सुनो तो आपको पता होगा दैट दे Mm-hmm. दे पिक अर्ली, लाइक 2 hours अर्ली. अच्छा. 9 बजे Okay. की शिफ्ट है, 2 घंटे पहले पिक कर लेते हैं आपको, I see. राइट? Okay. देन मैंने दिमाग ये लगाया था कि जब मैं सुबह होती थी तो मैं सीधा Mm-hmm. चला जाता था चिंगी अपने. आई वाज Okay. डूइंग दिस थिंग, आईबीएम की कोचिंग हुआ करती थी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट आईबीएम की थी वो. Mm-hmm. Mm-hmm. सो वहां से आई लर्न सी एंड अगेन Mm-hmm. सी.
कॉलेज में आप सी पढ़ते हो, वही चीज आप आज, लेकिन उस टाइम आपने पढ़ाई नहीं करी होती है तो आपको दोबारा पढ़ने पड़ रहा है, राइट? सो इस तरह से कुछ इस तरह का स्ट्रगल रहा, जहाँ पे रातों की नींद हराम हो गई थी, राइट राइट। आई वाज लाइक कब खत्म होंगे। देन आफ्टर वर्किंग 10 to 11 months, आई मतलब मैं आई resigned, right? And then I joined one startup, right, wherein they were not, they didn't give me even a single penny, but मेरा relation बहुत अच्छा से, ठीक है? So he's a very dear friend of mine. I will not take names of any people or company. For sure. But I joined the startup and I learned for their like 2 years without salary. 2 years, right? Approximately 2 years. And then gradually it, like I see the very important thing is that once you get into one segment जहाँ पे आपको जाना होता है, I wanted to be in an IT company, right? When I entered into it, I made my way. फिर मुझे ये पता चला coding is not my cup of tea. Then there was this thing called management, right? और मुझे कस्टमर से बात करना हमेशा से पसंद रहा है. Okay. I loved talking to customers, उनकी प्रॉब्लम सुनना, उनको एड्रेस करना सही से. So वो जो 11 महीने की जो है ना, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है. हाउ टू बी हम्बल, हाउ टू बी पेशेंट. अगर एक कस्टमर सपोज गुस्सा आ रहा है, कुछ गंदे गंदे वर्ड्स यूज कर रहा है, सो दे टॉट मी दैट they are not saying it to you personally, right? They are shouting at the services offered by this company, right? Don't take it personally. You need to create, you need to facilitate them, right? So all these things I learned from that service BPO say. I collated it here in a little bit of baniya skill, thoda about technical skill. Then I became a project manager. So all these I'm telling you in a summarized way, right? And then I paved my into project management, and then some one day this tech groups happened. Why I'm taking this company because you and I have worked together, and over there I got this role of head. So it happened like that, and then serving that company for 2-3 years, and then I am in whatever company I am in today as a program manager. So this is how I shaped up. So one lesson कि लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो, ये भी इसी लिखी लिखाई बातें हैं, बट बहुत लोग कम समझ पाते हैं. आप जो भी कर, ठीक है, कुछ ना कुछ उससे सीखने को ही मिलेगा. बीपीओ इट्स वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स इन माय करियर. मैं उस कंपनी में नहीं जाता, 11 महीने नहीं बताते, मैं नहीं सीख पाता कैसे कस्टमरों से बात करनी है. इमोशनल इंटेलिजेंस मैंने कैसे सीखी. राइट. वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट ऑफ पीपल मैनेजमेंट एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट. इमोशनल इंटेलिजेंट होना चाहिए आदमी को, राइट? दैट इज समथिंग फ्रॉम दैट वहां से. Yeah. So do you believe, like Harshit, like I also, read a lot of books, and, I always mention about the book. 1 second. So, I mean, do you believe in one thing, Harshit, like the way you have described your story, okay? And I can relate with that, a story with one thing. And the way you mentioned कि everything is, going to be helpful for you. Like कि जो आपके लिए एक lesson था BPO का, वो भी एक life में आपके लिए lesson था. And from there you get some learning, and that's what, that helps you in terms of your project management and to handle the clients, right? So, which I can relate. Like I was reading one of the book which was written by Paulo Coelho, that is Alchemist. It's one of the famous book, and in that book it is mentioned maktub. Everything is meant for a reason. Okay, so I used to, whenever I meet to people, I used to, talk this, more and more often, just because I can, see and I can experience that. So, what's your thought on this? Like, do you also believe like everything is a meant for a reason? Like the BPO job, is there was a reason for you to get a BPO job? You can easily get, job into directly into IT as well. But do you think like it was something which is meant for you, that first of all you'll get BPO, and then from there your path will be followed by this way? See, there are two things to answer over here. Yeah, for sure. When you use this word, was it meant for me? I will say no. I'll tell you why. I'll try to connect the dots over here, right? I have learned a lot from BPO, that is true. But was I meant for it? That was not. According to me, it is right. I'll tell you why. जब मैं बीपीओ में कॉल उठाता था ना, 7 घंटे की, 8 घंटे की, ऐसा नहीं हमेशा ही नाइट शिफ्ट रहती है. नाइट शिफ्ट एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए रह सकती है, राइट? हमेशा आपको नाइट शिफ्ट नहीं रहती है. बट जब मैं कॉल उठाता था ना दिन में, थैंक यू फॉर कॉलिंग, हाउ मे आई हेल्प यू,
मैं हमेशा आपसे ये सवाल पूछता था, like, is this what I am going to do? Is this what I meant? Is this what I meant to be? So if I'm asking this question, that means there is a doubt. You ask that question only wherein you want to hear no. Correct? But आप सवाल ही नहीं पूछते हो. Correct? So every single call, with every single call, अगर मैंने मान लो 1,00,000 कॉलें उठाई होंगी ना, तो in every call I used to ask, is this what I meant for? Is this what I meant for? Yeah. So for sure, I was not meant for that job, and I am not saying कि वो job, अरे मुझे नहीं करनी वो job. Job अच्छी है, मुझे नहीं करनी. Right? It was not meant for me. One question. Second question, I learned. Right? So मैंने क्या सीखा? I'll tell you one thing about job. Right? There was this very rogue manager, right? I वो नाम किसी का नहीं लेना चाहता. So उसने सीधा हराम सा कर रखा था वहाँ पे, एकदम मतलब कुछ मैनेजर्स हैं ना, that's okay. ठीक. See how things shapes, right? उसी कंपनी से बात करना सीखा, वहां पे मेरा मैनेजर है जिसको बात करनी नहीं आ रही है, राइट? उसी कंपनी से मैंने सीखा हाउ टू टॉक टू पीपल, हाउ टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स, व्हाट इज कस्टमर बिहेवियर. सॉरी, आई टुक द नेम, इट्स अ वेरी गुड कंपनी, राइट? सो इट लर्न्स. और आयरनी ऐसी कि आज वेयर आई एम इन एज अ प्रोग्राम मैनेजर, दैट गाय हैज इंटरव्यूड मी. मतलब आई टुक हिज इंटरव्यूज, and it was like a circle has been completed, right? He gave me that interview for the role of project coordinator in L&T itself, right? So because that time he was not humble, right? I mean, his nature is still the same, but the only thing which I said humbly, I responded humbly, right? That okay, whatever has happened, take a fresh start, because he was very much shocked, right? After like when he saw me in this window, he was very much shocked. And so I told that okay, whatever has happened, I'm not that guy, neither I am not even expecting you, and neither my, see, I will not take any grudges. If your interview will be good, if you will give the right answer, and simple as that. But see, this is what happens, right? But anyway, yeah, you were asking something. But anyways, so like you have already mentioned about that, so we were talking about that you were meant for that. So that's something. I think what I'm saying is all about you have taken in it a different way. जो मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास जो path होती है, like it's all about, it's a path of our journey. That's what I'm trying to match up. I'm not saying that you are meant for that, but that's all right. So you have your own opinion. Now moving to my next thing is all about, can you give us some kind of idea what is program manager and what does they do? Okay, so program manager is a big set of a work, right? For example, in very layman's term, let's suppose अभी recent में एक चीज चल रही है Windows 2012, right? So there are a lot of applications, right? One application is something which we deal in, like Facebook and all these things. One is enterprise applications, right? So enterprise applications में क्या होता है कि वो जो है एक बड़ी कंपनी कई सारे enterprise applications को यूज करती है. For example, Tally is one enterprise application, right? Okay. So अब क्या होता है कि ये जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, ये ऐसे होते हैं कि ये आपके बड़ी कंपनियों के खुद के सर्वर पे डिप्लॉय होते हैं, राइट? खुद के सर्वर पे डिप्लॉय होते हैं. ये वो सिस्टम नहीं है कि आप उनका सिर्फ SaaS यूज कर रहे हो, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यूज नहीं करते. आप उनसे समझते हो सॉफ्टवेयर लेते हो और अपने सर्वर पे इंस्टॉल करते हो, ठीक है? सो सर्वर के ऊपर एक OS होता है. आई होप आई एम नॉट गोइंग वेरी इनटू दिस, बट आई एम टेलिंग यू प्रोग्राम, राइट? सो लेट्स सपोज उस तरह के 100 सर्वर हैं, राइट? उन 100 सर्वरों पे डिफरेंट OS चल रहे हैं. तो अभी हाल फिलहाल ऐसा हुआ है कि विंडोज 2012 डेप्रिकेट कर रहा है. मतलब विंडोज जो माइक्रोसॉफ्ट है वो विंडोज 2012 को पूरी तरीके से खत्म कर रहा है, उसका सपोर्ट वगैरह. So that's a program, right? You need to eliminate that Windows 2012. If required, to upgrade the applications. So these big chunk of task, a task in which wherein there are very very small tasks related pertaining to that big task, that is called a program. बस थोड़ी responsibility बढ़ जाती है. The core will be project management. बस responsibility थोड़ी बड़ी हो जाती है. That's it. Okay. Now, I was just checking your LinkedIn as well, and I know about you as well. And so, like, from last, you have a good 9+ years of experience, 8 plus 9+ years of experience in the corporate world, okay? And you have a complete a lot in that short span of time. So can you give some kind of idea about your, a kind of mantra, I would say,
like I was just talking to you, it was like 1 or 2 years back, so you have told me about you got a good accomplishment of almost 300% of hike, I would say, which is something which is a great thing, fantastic thing, which is not easily accomplished by anyone. So that's a fantastic thing. So can you give us some kind of mantra for all the listeners or the viewers who's just watching this podcast? So how can we scale up ourselves to this level and can get more and more hike, right? So everyone is wants the hike. So can you give us some kind of mantra on that? Yeah, what's your lesson on that? Yeah. Mantra. Okay, Yeah. that's a tricky one, and we have reviewed 300%. That's not what we were talking about. Okay. So yeah, I Yeah, have got some a little bit hike, right? I see. But Yeah. the only mantra is that see, Mm-hmm. I Shubham, okay, I'm not trying to impress you, but you Mm-hmm. are pretty good in right, and Mm-hmm. it's like one thing is there that you need to be very confident, right? So Okay. when they're the only mantra is that whenever an interviewer asks you, do not Mm-hmm. consider it as a question answer round, and you are there. You are a very big Okay. example of it, right? Okay. Think Yeah. it as a conversation. In fact, in one interview, a Mm-hmm. interviewer was expecting me to very to be nervous, and he asked me that why are you nervous in a very humongous way, and I Mm-hmm. simply answered them that Mm-hmm. it's not the only it's the interview. It's not only that you are taking my interview. I'm also taking interview of your company, right? Okay. I am the Okay. one who will decide whether I will join your company or not. So why would I be Perfect. Yeah. nervous? Yeah. Nervousness should be both sides, right? If you are Yeah, for hiring a sure. good candidate, right? Mm-hmm. That's the Mm-hmm. good candidate decision whether to come with you or not. Exactly. So Yeah. that's the only mantra. Be very confident because see, if you know your basics very well, Mm-hmm. I know Mm-hmm. my management's basic very well. That's it. Mm-hmm. I Mm-hmm. crack interviews very easily because Mm-hmm. I am not giving interview, or it's not only I am giving interview, I'm taking interview as well, right? Okay. I'm Yeah. deciding whether to come with you or not. So that is the only Yeah. thing I Yeah. think stands me out from the other members. Mm-hmm. So I That's a think yeah, simple that is mantra. Yeah. So everyone who's just watching this podcast, so this is a simple mantra. It's all about the confidence, nothing more. And I think I'm also learning from Harshit, and maybe I can also get some kind of hike and that kind of confident. So I'm also learning. Maybe yeah, I'll get into that. but Now talking Shubham, to yeah. I would like to know one thing. See, one Mm-hmm. thing I am not, my subconscious mind is not accepting one thing. How Mm-hmm. to wake up early and do this exercise thing. And I trust me, I see your this WhatsApp post, right? And I Yeah. envy you. In fact, I am the one who knows you from inside and from I know you closely, right? You are the Yeah. guy Yeah. because you took a resolution that I will wake up at 30 a.m. And you Yeah. did that, right? I don't Yeah. know whether you do this exercise or not, or whether you just used to Yeah. wake up and then do a walk and come right Yeah. and sleep again. Yeah. But Yeah. how do you do that? How much? I mean, how do you maintain that sort of a discipline? This is something which I would like to know, man. I really envy you in this case. You are very energetic, man. Very Yes. energetic. Some Thanks for this. Yeah, thanks for this, Harshit. And like it is all about like you have some kind of thing like you are talking about the confidence. So that's what confidence is good when we talk about in terms of anything, in terms of work or in terms of anything. It's all about the thing which makes the good differentiate from the best. It's all about the discipline, right? Whoever it is, we have some kind of talent. Everyone has some sort of talents, right? And the discipline is all about the mindset, right? Every day if you work a simple thing and you are doing on a consistent basis, that's what makes you differentiate from a good to best. So now it is all about your mindset, right? What you are looking for, what you are aiming for. That's what you have mentioned in the very starting, like what you are meant for, what you think in your mind, like what kind of mindset you are looking for the good, you are looking for the best, or you are looking for the good greatest of all the time, right? So that's how, so it's all about the mindset. That's how the people used to do their efforts. That's how they are looking and they are aiming, and that's how the ambitious things goes on. I would like to mention here, Hashish, so which is written by Aristotle. So he's one of the great philosophers. So it is like this way: we are what we repeatedly do. Excellence then is not an skill, but it is a habit. So like it's all about your habit, what you do each and every day, and what kind of effort you are putting every day. That's how you shaped yourself in a bigger way on a longer term. So that's all. And moving forward, so I just want to ask you, the last thing is all about uh,
whenever I talk to you, whenever I get a chance to talk to you, so you have a great knowledge about the subconscious mind, right? So can you give us some kind of idea what is subconscious and what kind of impact subconscious mind in our daily lives? Because we all heard in on YouTube. I have also checked on my books, a lot of books also, it is all written like subconscious mind, subconscious mind. So people don't know like exactly we got some kind of advantage of that or not. So can you give us some kind of idea, and what's your life experience according to that? Yeah. So subconscious mind, I think you can call it as a weapon. ठीक है, अगर if it is not used properly, or if you can't harness its power in the right way, it can destroy you, right? So that is what subconscious mind is. क्या वो कर सकता है? So I'll give you an example. I'll try to make it very relatable with you, right? So what is subconscious mind? अगर आपके दिमाग में बचपन में when I got very low marks and I was failed in class 8, अगर मेरे बचपन में वो बात मैंने ठान लेती, राइट, कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा सबकॉन्शियस माइंड वो कैप्चर कर लेता, राइट? और सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली थर्ड लेयर होती है. पहले आपका कॉन्शियस माइंड, उसके पीछे सबकॉन्शियस माइंड होता है, और स्कल के अंदर, राइट? अगर उसने वो इमेज कैप्चर कर ली ना, तो सबकॉन्शियस माइंड में जो इमेज कैप्चर होती है वही एक्शंस आपके होते हैं, राइट? इसीलिए लोग कहते हैं, सी यू हैव सीन थ्री इडियट्स, वी ऑल हैव सीन थ्री इडियट्स. एवरी मूवी, उस हर अच्छी मूवी के अंदर सबकॉन्शियस माइंड का एक एग्जांपल है. वो कहता है ना ऑल इज, एक्चुअली वो दिल को नहीं कह रहा है ऑल इज वेल, वो अपने दिमाग को कह रहा है, सबकॉन्शियस माइंड को कह रहा है ऑल इज वेल, राइट? वो अपने दिमाग को कह रहा है. एक बहुत फेमस कोट है जो कहता है कि वॉरियर और कॉन्करर में ये फर्क होता है कि कॉन्करर जंग में जाने से पहले ही डिसाइड कर लेता है मैं ही जीतूंगा इस जंग को, जो अपने सब माइंड में कहता है. एंड लास्ट एग्जांपल इज दैट, आप मंदिर जाते हो, आपने बहुत सुना होगा कि मैं इस मंदिर में गया, मेरी ये मन्नत पूरी हो जाती है, ये मंदिर फेमस है, राइट? हाउ डज दिस वर्क? इट वर्क्स दिस वे. मैं कोई काम कर रहा हूँ, राइट, या मैं कोई काम करने की, मैं मंदिर जाता हूँ, भगवान के मत्थे टेक करता हूँ. अब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज आती है, अब तो मेरे भगवान, मैं उस मंदिर में आ गया कि मेरा ये काम हो जाएगा. जब मेरे दिमाग में ये आ गया ना, तो मेरे एक्शन भी वैसे ही होते रहेंगे जो मुझे रिजल्ट देगा. दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स लॉजिकली. सो आपके दिमाग में जब ये आ जाता है ना कि ये काम तो मैं कर लूंगा या हो जाएगा, तो आपके एक्शंस अपने आप चेंज होने लग जाते हैं. Exactly. And I can relate that, Harshit. And I've seen, and I've seen a lot of people, are facing such kind of challenge just because of the way you have mentioned कि अगर वो एक चीज capture होगी that you are a kind of negative person, right? And they feel that kind of negativity in every aspect of their life. ठीक है, अगर वो कोई भी काम करेंगे, if they think that they are not very good, so they always think कि ठीक है, that's what subconscious mind tells that person every time कि that you are not good enough. So that is okay. So can you give us some idea, or you have something like, if I want to get rid of this thing or if that picture, anything on that? Yeah, very good question. See, now how can you do that? So I'll give you one more example. So अभी क्या हुआ, there is this guy, एकदम लाइव है, मैं बता नहीं रहा वो क्या कैरेक्टर है, क्या है, कि वो बहुत ही फैमिली जहाँ पे उनके मम्मी पापा की पटती नहीं है, स्लम टाइप का बंदा में रह, वो घर में रह रहा है, उसके मम्मी पापा की बनती नहीं है, और उसने डेली अपने आप से, मतलब कोई सुविधाएं नहीं है पढ़ाई की, सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूब है उसके पास, ठीक है, और एक सब्सक्रिप्शन उसको दिला दिया उसके रिलेटिव ने, उसके मामा ने, और उससे हर कोई आके ये बात बोल के जा रहा है, बॉस तेरा कुछ होगा नहीं, तू तो कुछ जॉब ढूंढ ले. वो बच्चा 12th करके निकला है, वो आईआईटी की तैयारी कर रहा है, उससे बोला जा रहा है जॉब ढूंढ ले, तेरे घर के हालात बहुत खराब है, लोन ले रखे, स्लम में रह रहा है वो बंदा, राइट? द ओनली थिंग विच ही कीप्स रिपीटिंग टू हिज माइंड, मैं ही करूं. उसने उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बना ली. उसके सबकॉन्शियस माइंड को उसने ये बोला, सी द ओनली वे टू डील विद प्रॉब्लम्स इज दैट यू नीड टू टॉक टू योरसेल्फ एंड tell you, need to repeat it every time. यही तो अपॉर्चुनिटी है. सी उसने क्या सोचा, उसका माइंडसेट में बता रहा हूँ क्या था उस बच्चे के माइंडसेट में, उसके दिमाग में,
यही तो मेरी स्टोरी बन रही है, सी लुक एट द वे ही सॉ द पिक्चर, यही तो मेरी स्टोरी है। मैं I स्लम का see. हूँ, मेरे माँ बाप लड़ रहे हैं, मैं Hmm. पढ़ाई कर रहा हूँ देख के, यही तो I मेरी स्टोरी see. बन रही है। I see. मैं कैसे हार सकता हूँ, मेरी तो स्टोरी Hmm. बनेगी, मेरे जैसे लोगों की तो पिक्चर बनती है। Hmm. उस बंदे ने ऑल इंडिया रैंकिंग XYZ, ही इज इन Hmm. आईटी, ही इज इन आईआईटी खड़गपुर। I see. Oh, that's fantastic. Yeah. Yeah. So I can relate this. I can. आफ्टर दिस कॉल आई कैन गिव यू हिज नंबर, Yeah. ठीक है, रियल स्टोरी। दिस Oh, इज that's. व्हाट, दिस इज हाउ यू बीट सबकॉन्शियस। अगर आपको कोई नेगेटिव चीजें आ रही हैं, दिस इज Hmm. व्हाट इट डज। साइड क्यों होते हैं? क्योंकि आपका Hmm. सबकॉन्शियस माइंड को आप ट्रेन नहीं कर पाते हो। लड़की चली गई, Hmm. सुसाइड कर लिया, अरे Hmm. अपने दिमाग Hmm. को समझाओ ना, चली गई कोई होर की परी थी क्या, Hmm. राइट? या इस एग्जाम में फेल हो गया, या ठीक है, उससे बढ़िया मिलेगी, उससे बढ़िया, बढ़िया मिलेगी। राइट, यू नीड टू रिपीट इट एवरी बिल्कुल। टाइम। कुछ उससे इतना बढ़िया, बड़ा एक गई कर लूं, दूसरे आ गए। कुछ इतना हाँ। बड़ा कर लूं कि मेरा एक्स का पति मेरे यहाँ काम करे। हाउ Exactly, यू ट्रेन योर exactly, माइंड, राइट? exactly. सो That's how you play the mind. Yeah. हाउ इट हैपेंस, राइट? Hmm. So ऐसा ही was, अब I'll just finish it up because I like stating these kind of, everyone likes it, right? Mm-hmm. AR रहमान का मन था बर्कली स्कूल ऑफ म्यूजिक में जाने का, दिस इज वन ऑफ द Mm-hmm. बेस्ट स्कूल इन द वर्ल्ड। Mm-hmm. वो नहीं जा पाए, Mm-hmm. ठीक है। अगर वो बंदा Mm-hmm. अपने दिमाग में कह देता ना कि मैं म्यूजिक नहीं सीख सकता, तो आज Mm-hmm. उसी स्कूल ने उनको उपाधि दी है डॉक्टर की। वो एक Mm-hmm. ऐसा कर लेता, बिना Mm-hmm. गए हुए। आज Mm-hmm. उसी स्कूल ने उसको बुला के डॉक्टर बुलाया है, Mm-hmm. बर्कली स्कूल ऑफ म्यूजिक, सर्च इट अप, ठीक है। तो Mm-hmm. अगर Mm-hmm. दिस इज द पावर, राइट, अगर आप कोई चीज नहीं पा सकते तो ये भी मत सोचो वो मेरे लिए नहीं बनी थी, ये Mm-hmm. सोचो कि नहीं, अब मैं कुछ इतना बड़ा कर जाऊं कि ये चीज मेरे पास खुद ही आ जाए, Mm. राइट? Okay. एंड दिस इज एक्चुअली हैपेंस। ये कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे अरे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है बॉस। मैंने So आपको जो एग्जाम्पल बताए हैं, दीज आर रियल exactly, एग्जाम्पल, these are बड़ा the real एग्जाम्पल नहीं example. है। Yeah, and you are also one of the great example for us, like, starting a job from the BPO and still whatever you have achieved. So that is something, for a people like who are still in BPO, they can relate that story, man. They can also think out of the box and can think of something different, right? Because what people think, they start with a BPO and they end their life with a BPO, right? No one can think out of the thing, right? And you are some of the inspiration for those people who can think कि BPO has start where, but we have some kind of opportunity in the life to make some other career, whether it is anything like it's a communication pattern or is a public relationship domain or it's an anchoring job, whatever it is. So you are the one who can tell the people, okay, this is what I was, but I've just changed my situation. So that's a wonderful conversation with you, Harshit. We have talked about almost everything, like what was your story, how you have changed yourself, and what kind of instances impacts your life and how you have overcome from there, right? And we talked about the subconscious mind as well, like which is one of the most important thing of our life aspect as well. So there is a lot of gyan and everything we talked about on this show. And now moving to my final thing is all about what's your thought on life and how you're looking life these days, and what's your mindset and the future thing, I would say. Yeah. लाइफ तो बहुत ऐसी है कि बस सांस चल रही है, लाइफ चल रही है, राइट? बट ऑनेस्टली सी, रिसेंटली, Mm-hmm. when I say recently, 2 years back, I've realized what exactly I need to do. मतलब जीना, किस सिचुएशन में आप पैदा हो रहे हो वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन Exactly. आपकी मौत आपके हाथ में होनी चाहिए। कि आप Mm-hmm. एंड में जब जाओ तो कितना Mm-hmm. लेके जा रहे हो ये आपके हाथ में है। सो वो चीज आई नो, आई एम नॉट रिवीलिंग इट बिकॉज कल को ये नहीं हुई, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें हो जाए, बट आई एम Mm-hmm. वर्किंग टुवर्ड्स माई गोल्स, राइट? सो Mm-hmm. आई कैन गिव यू दैट कि हाँ, आई आई नेवर वांटेड टू बी अ जॉब गाय, right? I am from a Mm-hmm. business family, so at the Mm-hmm. end, the goal is simple. I want to be a businessman, Okay. right? So I'm working, I थोड़ा सा see. चल रहा है उसको काम, right? Mm-hmm. Let's see how it goes. But हाँ, I know my Okay. goal now, and that's a very Okay. important step. A lot of people don't know. I know you Mm-hmm. also know what is your goal, right? आपको Mm-hmm. गोल Mm-hmm. आपको पता होना चाहिए लाइफ का। वो Mm-hmm. चीज अपने को पता चली है, थोड़ी लेट पता चली है, बहुत For आजकल के sure. बच्चों को तो 23-24 साल में ही पता चल जाता है, 20 साल में ही पता Mm-hmm. चल जाता है, राइट? Mm-hmm. बट हाँ, लेट पता चली, बट इंपॉर्टेंट इज पता चल गई है। पता चली. Yeah. Correct. So that is So. something I, at the end, I want to turn myself into a businessman. So I Mm-hmm. am working on this. I'm studying All for right. that. See Yeah. how it All goes. right. All right. And we wish you all the best for that. And hope when you make your company a unicorn, so we'll again invite you on this show. So it's a great, and it's a privilege for me that you are on the show. We have talked about everything,
So anything you want to sum up or end up anything on this? Not at the moment. अभी तक मैं इस चीज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ. मैं द ग्रेट शिवम के शो में हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. दिस इज द All वेरी right. फर्स्ट टाइम All right. एक्सपीरियंसिंग. It's so humble Thank for you you. so much Yeah. So for thank you, everyone. inviting me. Thanks for watching this podcast. Keep watching. Stay smart, stay wonderful, and stay energetic. Bye bye.